हेलो एंड वेलकम टू द वैली ऑफ विजडम पॉडकास्ट। मैं हूं आपका को होस्ट फरहत उमर और आज हम एक नए दौर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां पे हम बातें करेंगे स्टोरीज की, कहानियों की, ऑफ फेलियर्स, ऑफ सक्सेस, ऑफ लव, ऑफ रेजिलियंस, ऑफ ग्रोथ। और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त मुहीत महराज। अस्सलाम वालेकुम फरहत। पहले तो आई वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज जैसा कि फरहत ने कहा कि हम एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट का नाम जो हमने दिया है वो वैली ऑफ विजडम है। इसके बैकग्राउंड की बात अगर हम करें कि क्यों हमने इसको वैली ऑफ विजडम का नाम दिया, तो जैसा कि लोग जानते हैं कि हम कश्मीर से हैं और कश्मीर की बहुत हज़ारों सालों की जो हिस्ट्री है उसमें अगर आप उस हिस्ट्री के अंदर जाएं, उसको डीपली देखें, तो आप देखेंगे कि कश्मीर जो जगह थी ये नॉलेज का एक हब थी। तो दूर दूर से लोग जो है कश्मीर की तलाश में होते थे और यहाँ आके अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए विजडम कलेक्ट करते थे। और हमने ये सोचा कि आज हमारे पास एक ऐसा मौका है जहाँ पे हम, हमारे दोस्त और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग किसी भी डोमेन से अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करें और आपको भी इस विजडम पॉडकास्ट का एक हिस्सा बनाएं। So Muheet, let's get the ball rolling. You have been a really remarkable entrepreneur with an amazing story. Your story resonates with the youth of Jammu and Kashmir because पिछले कई सालों से you have been an entrepreneur who has had a remarkably resilient of a story. You started Kashmir Box and you are managing it and you are driving it through really beautifully despite a very tumultuous phase. How has your journey been? बहुत बहुत शुक्रिया आपके अल्फाजों के लिए फरहत। लेकिन अगर मैं सच में कहूँ कि मैं खुद को सक्सेस नहीं कंसिडर करता। ऐसा नहीं है कि हमारी जो जर्नी रही है वो ऐसी है कि जिसको सक्सेस का नाम ना दिया जाए। बहुत सारे ऐसे मकाम आए कश्मीर बॉक्स की जर्नी में जहाँ पे खाली मैं नहीं, जो हमारी टीम थी जिनकी वजह से ये कंपनी आज वहाँ पे है जहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन भी है। लेकिन अगर हम उस पॉइंट को देखें जहां हम जाना चाहते हैं तो वो आज से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें सक्सेस की, तो पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ लोग ये समझे कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। आप सक्सेस को डिफाइन कैसे करते हैं। तो सक्सेस लोगों के लिए तो अलग है। मेरे लिए जो सक्सेस है वो शायद आपके लिए सक्सेस ना हो या किसी और के लिए सक्सेस ना हो। और इसमें एक छोटा सा एनेक्डोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज से 6-7 साल पहले की बात है। मैं दिल्ली में था और मैं अपने एक फ्रेंड को मिलने जा रहा था, तो मैंने एक कैब जो है बुक की थी। आपको भी याद होगा कि उन दिनों जो ये उबर और ओला हैं इंट्रोड्यूस हुए थे, बिल्कुल ये काफ़ी नए थे मार्केट में और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली ये मार्केट कर रहे थे अपने आप को। और जब मैंने देखा कि ये इतना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, तो मेरी आदत है लोगों से इंटरेक्ट करना और लोगों की स्टोरीज सुनना। तो जब मेरी कैब बुक हुई और मैं उस गाड़ी में बैठा, तो मेरे सामने जो ड्राइवर चला रहे थे उस गाड़ी को, तो एक कॉन्वर्जेशन हमने आपस में स्टार्ट की। जब उन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया तो मुझे ये मालूम हुआ कि जो उबर है और ओला है, ये दोनों कंपनीज उस टाइम पे इतना ज़्यादा बेनिफिट इन ड्राइवर्स को दे रहे थे कि जितने का वो काम भी कर रहे थे उससे दुगना उनको बेनिफिट्स में मिल रहा था। ऑब्वियसली ये ओला और उबर के लिए सस्टेनेबल नहीं था, लेकिन मार्केट को ग्रैब करने की एक अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी थी और बहुत काम भी कर रही थी। तो जब मैंने ये बात की उन ड्राइवर से और हमारी बात आगे बढ़ी, तो ऐसा नोटिस हुआ कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो करने के लिए। तो वो एक गाड़ी चला रहे थे और उसमें उनका इनकम लगभग 70 से 80 हज़ार एक महीने का हो रहा था। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर दैट आई एम, आई लुक्ड एट इट फ्रॉम दैट प्रिज्म एंड आई स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि आप अपने बिजनेस को 2x या 3x कैसे ले जा सकते हैं। तो अपनी कामकली में मुझे लगता है मैंने उनके साथ ये 1-2 चीज़ें शेयर की और एक पॉइंट पे वो सुनते गए और एक पॉइंट पे आके उन्होंने गाड़ी रोक के
पीछे मेरी तरफ देखा ठीक। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। ओके। तो आई वॉज टेकन अ बैक हाँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा शायद मैंने जो अपनी तरफ से उनको कहा, आपको पता नहीं होता कि इस इंसान का क्या बैकग्राउंड है, तो शायद मैंने उनको कहीं हर्ट तो नहीं कर दिया। और फिर वो उसके बाद मुस्कुराए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं इसलिए दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं इसलिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ और अमीर हूँ क्योंकि मेरी ज़रूरत बहुत कम है। वाह, क्या बात है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि ये जो सक्सेस का टर्म है हमारा, आज की डेट में हम सक्सेस को एट्रीब्यूट करते हैं अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग के साथ, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं अपने रेवेन्यूज के साथ, बिजनेस कितना बड़ा हो रहा है, बट हर किसी इंसान की जो अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसको ये फिगर आउट करना है कि उसके लिए वो सक्सेस क्या है। तो आपके सवाल का जवाब अगर मैं ये देना चाहूँ वो ये होगा कि मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ कि मेरे लिए सक्सेस क्या है। मैंने अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया है। Yes, we have not figured it out. So I'm reminded recently now I was reading this Ryan Holiday book और उसमें there is this author who happens to be invited by a very rich man. वो उनके यॉट पे जाते हैं, वो घूम रहे होते हैं, फिर एक इंसान उनको बोलता है कि भाई देखा इनका कितना बड़ा यॉट है और कितने पैसे होंगे इनके पास, जितना तुम जिंदगी में नहीं कमाओगे ये एक दिन में खर्च कर देता होगा। तो ये ऑथर उसको वापस जवाब देता है, यू नो व्हाट, इस इंसान के पास सब कुछ है बट आई हैव समथिंग दैट ही डज नॉट हैव। तो ये शख्स उचक्का होके उससे पूछता है क्या है तुम्हारे पास ऐसा? वो बोलता है द सेंस ऑफ इनफ। Beautiful. So he knew that at a certain point he has to say this is enough. There is this एक concept है which is kind of related to it जो psychology में सिखाया जाता है. It's called hedonic adaptation. कहते हैं कि hedonism is actually pleasure and all. So हमारे साथ क्या हो जाता है when we seek pleasure, हमने कोई चीज हमें प्लेजरेबल लगी, हम जब दूसरी बार वो चीज करते हैं इट इज लेस प्लेजरेबल। करेक्ट। या तो हमें उस चीज की इंटेंसिटी फिर बढ़ा देनी है टू फील मोर प्लीज्ड, लाइक अ चेज ड्रग। एग्जैक्टली। एंड दिस कीप्स, ये जो इंटेंसिटी है इसको बढ़ाना जरूरी होता है, और ये जो हिडोनिक एडाप्टेशन हमें हो जाती है, हैप्पीनेस की एडाप्टेशन हो जाती है, तो दिस रेस नेवर एंड्स। सो कहीं ना कहीं वी नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनफ। एंड मोहित, मेरे लिए सक्सेस, I think of it as a biryani. अच्छा। So it is more like बिरयानी में जैसे बहुत सारे spices होते हैं. So I say life की बिरयानी में 6 spices ज़रूरी हैं. The first spice is the spice of certainty. हम सबको अच्छी health चाहिए, हम सबको एक स्टेबल करियर चाहिए, हम सबको एक घर चाहिए रहने के लिए, और ये जब ये स्टेज हमारा पास हो जाता है फिर हम दूसरा स्पाइस ढूंढते हैं. वो होती है स्पाइस ऑफ अनसर्टनिटी. अगर किसी पास घर है, किसी पास अच्छा करियर है, उसको थोड़ा एडवेंचर भी चाहिए होता है. सो हम बोलते नहीं हैं बट वी ऑल लव सरप्राइजेस, वी ऑल लव थोड़ी बहुत अनसर्टनिटी. अब जब अनसर्टनिटी वाला स्पाइस भी डल गया है इस जिंदगी की बिरयानी में, वी सीक द स्पाइस ऑफ लव. वी वॉन्ट टू बी लव्ड एंड वी वॉन्ट टू लव. और लव वाला स्पाइस भी अब ऐड हो गया. उसके बाद वी सीक द स्पाइस ऑफ रिस्पेक्ट, द स्पाइस ऑफ एस्टीम. अरे लोग अब हमें रिस्पेक्ट भी करने चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए. अब जब ये चारों स्पाइसेस मिल गए ना, और अगर एक इंसान के पास ये चारों स्पाइसेस हैं और उसके बाद भी उसको खला महसूस हो रही है, पता है वो क्यों हो रही है? बिकॉज उस इंसान के पास 5वां स्पाइस नहीं है, विच इज द स्पाइस ऑफ ग्रोथ. सो ये जो लोग होते हैं दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग, ये इसलिए काम नहीं कर रहे होते क्योंकि वो बहुत ज्यादा और पैसा चाहते हैं. दे वॉन्ट टू ग्रो बिकॉज टोनी रॉबिन्स कहा करते हैं, ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस. सो ग्रोथ इज एसेंशियल लव में, क्योंकि एक पॉइंट के बाद यू आर गोइंग टू फील लिटिल ब्लैंक. पहले तो बहुत सारी बटरफ्लाइज घूम रही होती हैं स्टमक वगैरह में. और इसी तरीके से करियर में भी अगर ग्रोथ नहीं है और आप एक सीईओ हैं, ग्रोथ अगर नहीं है, यू आर गोइंग टू फील स्टक. हालांकि पूरी दुनिया के लिए विल बी अ सक्सेसफुल मैन. एंड देन हेल्थ वाइज भी आप एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचे और आप वहां पे रुके हुए हैं, यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट थिंग. सो 5वां स्पाइस ग्रोथ का मिल गया, बट उसके बाद भी अगर खला है ना, यू नीड अनदर स्पाइस
which is probably the most important of them all, which is the spice of spirituality, the spice of self actualization of sorts. और ये जो 6 स्पाइसेस हैं, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में, दे मेक अ वंडरफुल बिरयानी ऑफ लाइफ. तो ये बहुत ही एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने टच किया इस बिरयानी एग्जाम्पल में, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बाय द वे. ये जो छठा है, मैं इस पे थोड़ा सा डीप जाना चाहूंगा एंड आई ट्राई टू रिलेट इट टू द स्टोरी यू हैव पर्सनली, राइट? तो आपने कहा इट इज an element where we delve a little bit deeper into self-actualization. Yeah. And if I may simplify it for our audience, it is very well put, who am I? Right? So बहुत लोगों को तो जिंदगी लग जाती है सिर्फ ये देखने की मैं कौन हूँ. एंड जब आपको वो रियलाइजेशन होती है, शायद जो बाकी के सवाल हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं. बट ये जो एक सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. और इसको मैं आपकी जर्नी में भी पर्सनली देखता हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत कहीं और से की, आप आज कुछ और कर रहे हैं, बीच में आपने बहुत कुछ किया. तो क्या ये भी उसी जर्नी का पार्ट है? क्या ये भी वही बिरयानी को आप फिगर आउट कर रहे थे? इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू योर जर्नी अ लिटिल बिट. थैंक यू सो मच मोहित. दिस इज एक्चुअली दैट. सो इसमें मेरी पर्सनल लाइफ में आई हैव अ बिलीफ दैट वी हैव 2 lives, द लाइफ वी लिव एंड द लाइफ वी कुड लिव. सो और मेरी जिंदगी हमेशा से ही इट हैज बीन अबाउट फिगरिंग आउट हाउ कैन वी रीच द सेकेंड लाइफ, द लाइफ वी कुड लिव. और आई हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया दैट लाइफ ऑफ सक्सेस is not just about monetary success. It's not just about having a big bank balance. हालांकि पैसा has a very एक importance है पैसे की लाइफ में. So when you talk about life, in my personal perspective, मेरे लिए it has been a beautiful journey. और उस journey में I've always been figuring out how to reach a point जहाँ पे I could live the life that I really could live in my real sense. Or that took me to being a veterinarian, which was not my choice personally. But because of how the background I come from, my parents wanted me to be a veterinarian because being a doctor was considered a big thing, and it still is. And veterinarians have a role in the society. Or फिर I was still figuring out my whole life through that process. मुझे लगता है ना कभी कभी कि just like prophets have this, उनको एक मनसब दिया जाता है. They have to be shepherds in one part of their life because they have to understand animals. And they have to kind of, जैसे मूसा को या ईसा अलैहिस्सलाम या Prophet Muhammad peace be upon him, they had to go through this journey. मुझे लगता है कि मेरे लिए being in animals and treating animals and knowing animals, it gave me an amazing insight on life. And then I moved ahead and did my advanced degree in molecular genetics, and that was again very insightful of sorts. मुझे उससे एक खास ये बात पता चली कि science is really advanced in a big way, and we think with amazing complexity. जब हम पूरी दुनिया में जो रिसर्च देखते हैं, हम पूरी दुनिया में जो लैब्स में जो काम हो रहा है, एवरेज इंसान को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या हो रहा है. So we are capable of amazing complexity as human beings. फिर मैं सोचने लगा कि अगर इतनी complexity we are capable of that, what about us using these principles in our lives and improving it? So that took me to a lot of self-introspection personally, and also finding the right mentors who helped me put those very complex ideas in life and helped me simplify them for everybody else. And वो journey ने फिर मुझे लाया to what I am doing now. You know मोहित, एक बहुत ही important aspect जो जिंदगी का है ना, शायद थोड़ा सा मैं यहाँ negative चला जाऊँ, please excuse me for that, but it's death. So stoic philosophy में कहते हैं memento mori, think about death often. हमें कुरान भी यही सिखाता है, हमारे religious traditions भी यही सिखाते हैं कि we should remember death. And I often think of this scenario कि I am at my last moment in life, and who is going to say what about what I did? What's my legacy going to be? This keeps me, wondering कि मेरी जो life की बिरयानी है, उसमें कौन सा spice कितना डलना चाहिए. And
आई एम ऑलवेज अबाउट बैलेंस। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो रिलेशनशिप्स हों, वो फिजिकल हेल्थ हो, वो इमोशनल हेल्थ हो, वो फाइनेंशियल हेल्थ हो, उनमें एक स्वीट स्पॉट मैं ढूंढ पाऊँ। और मुझे बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बारे में कि लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, दे आर बेसिकली related to the human experience. They are related to how you are with your relationships. They are related to what you give back to the society. It has taken us 13.8 billion years to reach this point. And there is never going to be any other person like me. मैं एक geneticist हूँ. So, मेरा जो genetic makeup है, वैसा दोबारा नहीं होने वाला. So it's a beautiful event in the history of the universe. ना इसके बाद कुछ ऐसा होगा, 30 बिलियन सालों तक कहते हैं यूनिवर्स रहेगी. No matter how insignificant it is in the grand scheme of the universe, right? Exactly. And then that always makes me wonder कि ये जो एक जिंदगी मुझे गिफ्ट के तौर पे मिली है, how do I strike a balance in this life? I see people who are extremely famous and miserable. I see people who have a lot of riches and still have very limited experience as a family person. I look at people who have exceptional power, but वो घर जाने से कतराते हैं. And that always makes me wonder, where is that balance? और मैं चाहता हूँ, और मेरी ये constant कोशिश है, the life that I want to live is a life that has that all the aspects are covered. अब इसमें एक important aspect ये है कि ओके, मुझे कोई इंसान बोलता है कि यार मैं तो, लेकिन कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में ही नहीं है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, वॉर्स हैं, फैमिन्स हैं, कोविड है. आई टेल देम दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस. आई एम रियली फोकस्ड ऑन थिंग्स दैट आई कैन रियली इन्फ्लुएंस. बाकी सारी चीज़ें दे आर आउट ऑफ माई इन्फ्लुएंस. जब वो आएंगी, जब वो होंगी, तब उनसे निपटा जाएगा. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लग रहा है मैं शेयर करूँ. क्या प्लीज. आपने बहुत अच्छी एक बात कही बैलेंस बनाने की. लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जिंदगियाँ हैं, वो बैलेंस बनाने के लिए भी एक जर्नी लेनी पड़ती है. ये ऐसा नहीं है कि इट्स एन ओवरनाइट थिंग, राइट? तो एक मूवी है, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, जिसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. ओह, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. या इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज आई हैव पर्सनली सीन. एंड वहाँ पे एक जो मैसेज निकल के आता है कि एब्सोल्यूट हैप्पीनेस तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस हैप्पीनेस की तरफ आप अपना परस्यूट रख सकते हैं. जी जी. तो उसी तरीके से सक्सेस भी अगर हम डिफाइन करते हैं किसी के लिए भी, आई डोंट थिंक कि किसी भी टाइम पे कोई अपनी एब्सोल्यूट सक्सेस तक शायद पहुंचे, राइट. लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि उस सक्सेस के लिए जो उसकी परस्यूट है, वो उस चीज को जारी रखे. एग्जैक्टली. जहां पे आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जर्नी की बात आती है, रिलेशनशिप्स की बात आती है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है, आपने भी नोटिस किया होगा, और मैं यहाँ थोड़ा कश्मीर बॉक्स की जर्नी के थ्रू भी आपको ये पॉइंट समझाना चाहूँगा. वो ये है कि जब मैं सेकेंड या थर्ड क्लास में था पर्सनली, तो मैं एक पायलट बनना चाहता था. जी जी. जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो आई गॉट इंटरेस्टेड इन साइंसेस एंड आई वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट. 9th 10th तक आते आते डिस्कवरी चैनल इतना देखा कि आई वाज सो फैसिनेटेड बाय दिस यूनिवर्स एंड बिग बैंग दैट आई वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट. आते आते 11th 12th तक it came to engineering, and then I ended up doing computer applications in जो bachelor's था मेरा, and I ended up as an accidental entrepreneur. I never intended to be an entrepreneur, but I just happened to be. ये जो मैं एक्सपीरियंस शेयर आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि हर साल, हर टाइम, हर एक्सपीरियंस के बाद आप भी एज अ पर्सन जो है इवॉल्व होते हैं. एग्जैक्टली. और आपकी पसंद, आपकी नापसंद, ये सारी चीजें जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती है. exactly. तो सक्सेस का भी जो टर्म है वो जिंदगी में भी इवॉल्व होता रहता है. तो हमेशा वो जो नया बेंचमार्क है सक्सेस का, उसके लिए आपको जो है अपनी परस्यूट जारी रखनी है. वो एब्सोल्यूट पे अगर आप आ गए देन यू आर एज गुड एज डेड. दिस इज ब्यूटीफुल. और जब आप एक समिट चढ़ते हैं और फिर एक पॉइंट पे आपको एक पहाड़ दिख रहा होता है
और आप इस पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं और आपके लिए दिस इज द ओनली गोल यू हैव फॉर दैट पॉइंट। फिर जब आप चढ़ते हैं, यू रीच अ सर्टन पॉइंट, आपके लिए और राहें खुलती हैं। You see a bigger summit. And life is not about reaching that summit. It is the process. And how you enjoy the process. मुझे एक ना बड़ा ही सर एक रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनके एक जब हम उनको याद करते हैं ना, वी यूजुअली थिंक ऑफ हिम, या कोई भी दुनिया की सेलिब्रिटी जो रही हैं, या कोई भी दुनिया का जो स्कॉलर रहा है या साइंटिस्ट रहा है, we think of them from a very narrow एक snapshot in the history. जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, we know him from that I have a dream speech. We know him from civil rights movement in America. But you know, there is more to his story. And it is marred with failures. It's marred with self-doubt. It's marred with choices. कि ये चूज करूं कि ये चूज करूं, यहां रहूं कि वहां रहूं, यहां लीडरशिप पोजीशन छोड़ूं या बने रहूं. There are lots of these amazing scuffles that we have with our own selves and that we have with the journey, that we have with the destiny, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता. मैं एक इंसिडेंट उनका सुन रहा था. बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल. उनकी वो जो स्पीच है उसको याद रखा किया जाता है, इट इज सीन, उसको इवेल्युएट किया जाता है. ही इवन वन अ नोबेल प्राइज उसके बाद. और वो जो पूरा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आए, ब्लैक अमेरिकन को वोटिंग राइट्स मिले वगैरह वगैरह. इस सब में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है उनकी हिस्ट्री में आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ हिज गेम कि उनको फॉर हिज वन ऑफ हिज स्पीचेस ही इज बूड डाउन बाय द ऑडियंस. We have to kind of think of life from a very, very holistic and a broader perspective, not merely as one point जिसको हम success बोलते हैं. So success may be an island, but there is a whole ocean out there of failures, and we have to accept life as a whole, not merely as a certain point or a certain snapshot in life. सो तभी मोहित ना हमेशा मुझे टेंशन बनी रहती है, हमेशा मेरा परस्यूट मेरी जिंदगी का यही रहता है कि अगर मैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं और मेरी पर्सनल लाइफ में माय वाइफ इज़ नॉट हैप्पी और माय किड्स से हमने पापा को बिल्कुल ही नहीं देखा था कभी, या वो इतना बिजी रहते थे अपने काम में कि हम उसको देख ही नहीं पाते थे, आई वुड रियली नॉट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ. एंड देन मोहित, लाइफ में ना goals are really important. I'll talk to you about goals and I'll ask you about your goals. But मेरे लिए goals have such a relevance, and not because they lead to results. मैं मानता हूं goals की सबसे बड़ी utility होती है in giving you direction, in letting you know आपको किस direction में जाना है. Otherwise this whole world is very chaotic और आपको हर एक इंसान अपना एजेंडा थमा देता है जब आपके पास कोई एजेंडा नहीं होता. सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि आपके गोल्स क्या हैं, एंड देन देर आर सर्टन गोल्स दैट यू मस्ट हैव इन योर लाइफ, जो मैंने रियलाइज किया है थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ. वो गोल्स हैं गोल्स रिलेटेड टू योर हेल्थ. वी टेक इट वेरी फॉर ग्रांटेड, और फिर क्या हो जाता है व्हेन वी बिकम 30-35 चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं. हम देखते हैं नाउ दैट वी आर इन 30s, वी रियलाइज अच्छा अब कमर में भी दर्द होना शुरू हो गया है. एंड वी ऑल्सो रियलाइज कि हम अब इंडाइजेशन होना भी शुरू हो गया है. वी ऑल्सो रियलाइज कि अब थकावट थोड़ी सी होनी शुरू हो गई है. एंड देन देर आर गोल्स, देर आर 4 कोर गोल्स जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है जो हमें रखने चाहिए. द फर्स्ट वन इज द स्टिलनेस ऑफ अ मंक. So we should all aspire to have the stillness, have the calm of a monk. Halanki, it's a big goal to have, but if we kind of move towards it, we are eventually going to probably reach there. Or even if we do not reach there and we are midway, we are still sorted. Then there is a goal I call curiosity of a child. मेरी बेटी है 3-3.5 साल की. She is extremely curious about everything. And she learns so much more than we learn. हमारे साथ क्या हो जाता है ना, आफ्टर वी एंड अप बीइंग इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, वी स्टॉप लर्निंग.
और या कॉलेज लाइफ में भी हमें एक सिलेबस थमा दिया जाता है, हमें बोला जाता है ये पढ़ो, बट we do not want to evolve as people. And we have this remarkable capacity to evolve and be better and change the physiology and the physical जो structure हमारे brain का हम बदल सकते हैं if we are curious enough. Then there is the third one is fitness of an athlete. We should aspire to be as fit as an athlete. Even if we do not reach there, it's okay. But have some kind of a daily routine that involves that. Then there is passion of an entrepreneur. So we should all aspire to have this passion burning. मुझे पता है, you as an entrepreneur, आपको आप मुझे लगता है जब आप घर पे भी होते होंगे, all you're thinking about is your enterprise. So that is the kind of passion we should have to build something bigger than yourself, to build something that has a lot of impact on the world. And it could be an enterprise, but it could be a book, it could be a painting, it could be a poem, it could be anything. But have that kind of an aspiration, it makes you live to the fullest. यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एंड आई थिंक यू हैव काइंड ऑफ ब्यूटिफुली समड इट अप इनटू दीज 4 पॉइंट्स. आई ऑलवेज से दिस दैट यू नो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, सो एक चीज़ तो हमने अग्री कर ही लिया कि ये परस्यूट ऑफ सक्सेस है, सो विल टॉक अबाउट परस्यूट ऑफ सक्सेस. इन माई व्यू वन नीड्स 2 थिंग्स. One is curiosity, and second is wisdom. Wow. And the reason why I say this is because curiosity builds intelligence. You know, I've had a lot of friends while I was growing up. You know, there was this notion, even in your elders, your family, कि वो intelligent है, ये intelligent नहीं है. You know, now we have come to a stage where we realize that every person is different. True. कोई art में interested है तो वो art में intelligent होगा. उसको अगर आप consider करेंगे वो science में intelligent बने, then you are setting them up for a failure, right? True, Not for success. So I think what is very important is to first identify what is it that resonates with you. जो आपने passion की बात कही, so I'll just add upon that. Passion, but किस vertical के लिए, किस domain के लिए, I think that is very important. True. Once you have identified that passion, the second thing is becoming curious about it. The more curious you are about stuff in any domain, you will realize that you get more intelligent about it. Wow. Because there is no one who's thrusting that information down your throat, right? Exactly. It is something that you are taking in every single day. True. And it's something, you know, then universe also helps you because you have that passion. So everywhere you see bits and pieces of that, you will start taking them in. So that's one. So curiosity builds intelligence. Right. And then once you have this intelligence, you should also experiment. Like you were saying, right? You should try to do stuff. Some things will work, some things might not work. True. But there's one thing that you will get, whether it is a success or a failure, is the experience out of it. Beautiful. And that experience over a time will build wisdom. And in order for you to be successful, or at least be on that pursuit to success, I think these 2 things are very critical, which I think people are missing today, which is one, being curious about stuff, which builds intelligence, and then having wisdom, which is only built by experience, and experience comes from experimentation. So I think that's how I would like to sum up the points that you just said. This is beautiful, Muheet, and you have summed it up so beautifully. Curiosity and wisdom. So I was wondering, you know, you have had the curiosity because you are an accidental entrepreneur, as you said. And then you have seen failures. Oh yeah, a lot of them. One after another. Right. How do you still survive? And let's bring in this point. क्योंकि हम इस पूरे podcast की series में, we're going to talk a lot about resilience. Right. So I want to know your story of resilience. So how did it start first as an entrepreneur? And then what are the different failures you went through? What was your mindset when you went through all that? And how did you evolve as a person across the journey? जैसा आपने कहा ना कि इंसान की 2 लाइव्स होती हैं. At least I have come to a conclusion at my own level. We have multiple lives, not just 2. Okay. And every stage of your life, you're a different person. And based on the experience, the information that you have available, you take decisions based on that, right? And over a period of time, you evolve. So
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है. I gave you a little bit brief about the journey that I had before I ventured into entrepreneurship. Right. So I was very curious about technology as such. What fascinated me was that I am in a place like Kashmir. We don't really have much access to knowledge, to education also. The infrastructure is not there. But I still see that through this one internet medium, I can have access to everything and anything that I want in life, right? Right. Whether it was communicating to my friends who were sitting maybe thousands of Right. miles away, So true. or maybe getting information from, let's say, someone who is at Harvard, right? Although I would say last 12 साल में Kashmir Box started in 2011. I was a 20-year-old kid at that time. Wow. But since then also, I think the way technology has flourished, it has democratized every single thing. So आज की डेट में अगर मुझे कोई बोलता है कि मैं कश्मीर में हूँ और मेरे पास access नहीं है, so I kind of laugh it off. Because everything that you need is available and it is completely free of cost. Right. So my suggestion to everyone is go to the internet and get that that ocean of knowledge. Ocean Arabic में Muheet ही है, so Oh, wow. I take this as a joke also and say Wow. go and find the knowledge is Muheet. Coming back to the story that we were discussing, so Kashmir Box happened while I was in my college days, and because I was so fascinated about technology, I looked at this Kashmir industry of craft and produce. And I looked at the online space. I tried to search for companies or individuals who were trying to sell this stuff because Kashmir as a place, it's so beautiful. But there's one more interesting fact about Kashmir, which is that it is the only place in the world which has a huge network of offline stores across the globe. Okay. Unfortunately or fortunately, it's not owned by a single entity, but it is a collective community that has gone out. Whatever the case may have been, post 1990, we had issues also. But this community went out to the corners of the world. Okay. So, irrespective of whether you go to America, you go to Japan, you go to Singapore, you go to France, you go to Prague, you go to Middle East, you will find a Kashmiri handicraft showroom selling Kashmiri products, right? And there was nothing on the internet. And me being the naive person that I was at that point in time, I just ventured into it and I thought maybe it's a business opportunity. You can set up a website and then you'll be able to sell all of this stuff. And did you have any technical background? No, I was studying I was doing my bachelor's in computer applications. Okay. But that's the fundamental flaw that I had at that point in time, which was that if I understand technology, I'll be able to build a business. Okay. Because a business is a lot more than building, let's say, a website, which in case is a small portion of the setup that we were trying to create. And that was my first mistake, the first learning, thinking that building a website means building a successful business, right? So once we set up the business, the website, me and my co-founder, we set it up. Then obviously we had to sell stuff. So in order to sell stuff, you need to put that stuff on the website. True. And how do you put that stuff on the website? You need to talk to people, you need to talk to suppliers, you need to talk to artisans. And that's where we realized that the fundamental problem with Kashmir handicraft and food, the entire ecosystem, is that it does not behave or work like a structured industry. Okay. It behaves like a cottage industry. So it is completely fragmented. And moreover, the artisans who are the backbone of this industry, unfortunately, the wages that they had at that point in time, and today also it's the same story, it was not even enough for their sustenance. Right. So we were looking at a business that was declining year over year. And at some point in time, you would not see these beautiful masterpieces coming out. Right. And that's where we realized that apart from being a business, this business must also have a social angle to it, right? Right. And it is a mission. And that's where I realized that this setup that I'm creating has to be more of a responsibility Right. than a business opportunity. And that's how we look at it. And I was fortunate enough to have a mentor as a co-founder, Ishfaq Mir, right? Gigi.
who comes from the family who have been in this trade for decades. And the thing that I got to learn from him was one, that humility. You have everything that you can dream of, but still somehow you want to contribute back to that Wow. society, Uh-huh. right? And that is what got me thinking that if a person like Ishfaq bhai, if he's trying to drive change at the socio-economic level, how can I contribute to this? So one of the things that, just to answer your question, how did we still pursue? I think that perseverance came from that vision and mission that we set for ourselves, which was that somehow we have to contribute to the socio-economic development of the industry that we are working in. Right. And while we were onboarding these artisans, some of them did not even understand what internet is. We are talking way back 2011. Facebook was not as popular. Flipkart was just 2 years old in Yeah. India, so e-commerce was relatively new. And I still remember one artisan telling us, "ये डब्बे पे आप क्या बेचेंगे?" He was referring to a laptop, Okay. right? So we have come a long way since then, obviously. But just to navigate that challenge of trying to get those artisans on the platform for them to develop trust on a 20-year-old kid was a major challenge. So that was one failure. It took us 6-7 months to come over that failure and start building that trust. And then once we slowly started setting up the website, we got our first order. Okay. I remember it was for a paper mache box Okay. from a customer based out of Delhi. And all of a sudden, I had to fulfill that order, and we didn't have a team. Okay. So what I did is I took on a bus. I got on a bus. Our office was in the heart of the downtown Nawab Bazaar. The vendor, the supplier was in Lal Bazaar. Okay. So I hopped on a bus. It took me 1.5 hours to get there and take the product from them because I could not send a WhatsApp message back ठीक, then. ठीक. Took the product from them, brought it to the office, packed it myself, and then tried to ship it with the courier company. I called them up and they said, "Are you crazy? Are we going to come to your office for just one shipment?" And that was the second failure where we realized that although for you look at your business or your success by the things that you're capable of doing in the future, but others look at what you have already done. Wow. So that Beautiful. was one of the biggest Beautiful. learning Yeah. that there was, that I may consider myself a success, but people see what I have done in the past. And Yeah. that I think turned the tables for me personally, because that is the point I realized that you will have to be humble all across. Because irrespective, no matter where you are in your life, you can always find someone bigger than you or someone smaller than you. And it only happens when you start comparing yourself to each other, right? Right. And that's where the second learning came. We then started shipping out orders. We then had a couple of people join our team. So slowly and steadily, we had people who were helping on the social media side, on order fulfillment side, vendor side. And then we had issues of internet blockages as well. Yeah. And I mean, it'll take a lifetime to share the experience on that. But just a small anecdote there. In 2016, unfortunately, when we had a 4-month shutdown, there was literally no way for us, because it was a curfew that was put on. There was no way for us to operate as a business. So we thought to ourselves, what can we do? And very honestly speaking, I was at my home. I had no clue of what we are going to do. I was thinking that the business is going to shut. But one of the vendors who was selling with us actually came to our team and came to meet us. And he said something that completely blew my mind, which was that right now there's no tourism to Kashmir. We work with these small time shopkeepers. They are not operating. If you guys don't operate with the structure that you have, the internet, we know that there are challenges. But if you guys don't operate, how do you think we are going to sustain? Wow. And then it came back to that point of, this being a responsibility, and we'll have to figure a way out to run the business. And that's where we took a call. Me and a couple of our early team members, employees, we went to Delhi. We set up a small apartment there, and that became our Delhi office. The team used to work at around 4 a.m. They used to come to the office. We used to shut the doors, and everything used to be like there's no one inside. And because there was no internet, we used to note down all the orders that we had there
And then we used to send a fax. we used to, yeah, we used to send a I was instantly thinking of a pigeon, yeah, carrying it. no, So that would have been a lot slower. But Almighty was kind, and we basically used the fax service. So we used to send those orders. The suppliers, the vendors used to come at around 4 or 5 a.m. in the morning to our this office, is amazing. drop the stuff, and then we used to, pack it all up and push it to the airport, send the stuff to Delhi to our apartment. That's where we used to individually pack those orders and then send them to consumers. And that was another learning. When you are passionate about something, it may also happen that a lot of times you may feel that there are no doors, but there are always opportunities. You just have to keep your mind and your heart open. And that's where how we were able to at least navigate that one challenge. But I think if we go a little bit deeper, it will take a lot more time. So I'll. This is an incredible story, Muheet. So, and the way you have navigated the challenges, it's remarkable. And it brings me to this point. Why do you pursue this difficult journey? Does it make you happy? It's a very good question, Farhat. And I've been asking myself that every single day for the last 3-4 years. Post 2019, I went to the Middle East. I was working with some of the leading corporates of the world, billion-dollar companies, and I had an option to stay there and scale those, help scale those multi-million, billion-dollar businesses. And but somehow, at some point, what I realized is what I was doing there was not making me happy. Okay. And it was that pursuit of happiness that brought me back. So, Wow. absolutely. Again, coming to the same point where we say whether or not it is about monetary benefit, whether it is about contributing to the society, I think at the end of the day, money is not everything for everyone, right? True. And for me, what I tried to delve upon was what is it that ultimately would give me that sense of purpose in life? And somehow it keeps coming back to contributing to people's lives and making them better. That's beautiful. Right? And something that we started 5 months back, the idea of Launchpad Kashmir, although the seeds of that has been sown way back by Ishfaq Bhai, where the idea was to create a Kashmir business factory, where we incubate businesses and, bring them to the world. We have started on that journey again. You're already a part of it. You would have that information. So when I come back, now that I have this experience, now that I have those connections, I've worked in the Middle East. I've worked with almost 20 plus nationalities, and let me tell you very honestly, Kashmiris are the finest when it comes to human capital around the world. No question about that. One of the finest. Let's pat ourselves on the back for that. Oh, 100%. I'm telling you, I've worked with almost 20-25 nationalities, and no doubt Kashmiris were amongst the top there. The challenge that we have is we don't have enough opportunities here. And even if there are opportunities for people to venture into business or venture into something that they would like to contribute in, they don't have any platforms. Right. So thinking about that I'll be able to create with the help of people, obviously it is not an individual thing, right? It is a collective effort. If we are able to build something out of this place which has a global impact, starting off with impact in Kashmir, Right. I think that became my purpose, and that's why everything and anything that I do in my life will always revolve around community, empowerment, and social impact. Muheet, Friedrich Nietzsche कहा करते हैं, one who has a why can overcome almost any how. Wow. So you have found your I hope purpose, I and will this be is able to. beautiful. I hope. And just adding to what you said about money. Money, एक खास point तक तो removes a lot of unhappiness from your lives. That goes without saying. But after that, उसके बाद क्या हो जाता है? There has been significant amount of research done on it. Correct. Nothing changes. Nothing remarkable changes. But yeah, it can still bring you happiness if you do 3 things with it. The first one, if you buy experiences out of it. The second one, if you buy time by the money that you have. And the third one, if you give away money in pursuits which are bigger than you.
And what you're essentially doing is the third one. You are using your clout and all the contacts that you have created and the amazing amount of experience that you have in building something remarkable in Kashmir. And that's what this podcast is all about. Yeah, absolutely. So we kind of converged on it because we want to create a platform जहाँ पे हम मेरा बैकग्राउंड साइंस है, मेरा बैकग्राउंड रिसर्च है, एंड मेरा बैकग्राउंड पर्सनल ग्रोथ है, एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु इज इन टच विद मेनी एंटरप्रेन्योर्स. सो व्हाट द आइडिया इज टू बेसिकली गेट इन ऑल दीज पीपल and ask them to tell us about their life's journeys and what is the wisdom that they have been able to distill out of it. Absolutely. So, एक रूमी रहमतुल्लाह अलैह उनका एक कलाम है, एंड आई विल से दिस इन इंग्लिश. वो कहते हैं कि यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन ओशन इन द ड्रॉप. तो उसी एनालॉजी के ऊपर जो आइडिया है इस पॉडकास्ट का वो यही है कि हम सब में कहीं ना कहीं वो एक ओशन है जहाँ पे हमारे पास लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं. जी जी. कुछ हमने सीखा है, जी जी. कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है, और कहीं ना कहीं इन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू हम चाहते हैं कि वो जो विजडम है जी जी. वो हम एक लार्जर ऑडियंस पूल की तरफ पहुंचा सकें. एग्जैक्टली. एंड देन वी वांट दीज रहबर्स जो हमारे हैं, ये लीडर्स हैं, वी वांट देम टू कम इन द फ्रंट. आई वांट टू टॉक टू देम एंड see what they have to offer to us. एक शेर, क्योंकि आपने रूमी की बात की, बहुत जरूरी. तो एक शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ रहबरों के बारे में. कारवां जैसा हो रहबर ही मंजिल तक पहुंचाता है. ब्यूटीफुल. एक हुनरमंद माली ही बीहड़ में बाग बसाता है. Absolutely. ख्वाबों को पूरा करने की हर फर्द में ताकत होती है. कमाल तो लेकिन उसका है जो हमको ख्वाब दिखाता है. Oh, absolutely amazing. So we are going to get all these people जो हमें वो ख्वाब दिखाएंगे और वो राह दिखाएंगे, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो उनसे सीखें, उनसे चीज़ें समझें, और हम एक बहुत ही एक खूबसूरत समाज की नींव डाल सकें और उसमें एक अपना एक रोल अदा कर सकें. Absolutely. तो जो हम अपने रहबरी की बात की, हम उसको हमारे जो डोमेन है एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोफेशनल डोमेन आप कह सकते हैं, हम मेंटरशिप कहते हैं, राइट. सो ये मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप हज़ारों किताबें पढ़ सकते हैं. क्यों पढ़ते हैं हम किताबें? अगर हम पढ़ते भी हैं तो आइडिया यही होता है कि किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपको वो जो व्हील है इनोवेशन का, वो आपको बार बार आपको रिक्रिएट नहीं करने की जरूरत है. इफ समवन हु हैज गॉन ऑन दैट जर्नी, हैज सीन दैट, हैज एन एक्सपीरियंस इन दैट, वो आपका जो लर्निंग कर्व है वो 5 साल से नीचे करके 6 महीने कर सकता है. सो इमेजिन अगर आप एक AI स्टार्टअप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है या आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, और कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी 20 साल 25 साल से वो कर रहा है, उनके साथ 1 घंटे का पॉडकास्ट या उनके साथ 1 घंटे का सेशन इज इक्विवेलेंट टू आपके 4 साल या 5 साल की डिग्री. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑडियंस से भी, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और थॉट लीडर्स इंशाल्लाह हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में आने वाले हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा ये विजडम की जो बातें हैं हम पहुंचा सकें. और डेफिनेटली उसमें मैं फरहत का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि अगर फरहत नहीं होते तो शायद हम ये जो इनिशिएटिव है वो साथ में शुरू ना कर पाते. यस मोहित, इट्स बिन एन ऑनर. सो मैं हमेशा से सोचता था कि मोहित के साथ आई हैव टू डू समथिंग, एंड लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लर्निंग. एंड फॉर मी इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ अ सेल्फ डिस्कवरी. मैं खुद जानना चाहता हूँ, खुद को बेहतर समझना चाहता हूँ, और जब हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट्स गोइंग टू हैपन. और साथ में आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, और मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि किताबें पढ़ा करें. मैं हमारी जो जितनी भी कम्युनिटी है यहाँ पे वो किताबें पढ़ने का कल्चर नहीं रहा. तो आई कीप टेलिंग पीपल प्लीज रीड, क्योंकि एक ऑथर क्या करता है, अपने सालों की एक्सपीरियंसेस 8-10 घंटे की किताब में वो छाप देता है. Absolutely. और फिर हमारे पास मौका एक होता है कि वो और हमारे पास मौका होता है कि वो सालों की एक्सपीरियंस हम कुछ घंटों में जज्ब कर पाएं. Absolutely. और फॉर मी बुक्स आर लाइक टाइम मशीन्स. दे हेल्प अस लिव फॉर सेंचुरीज इन अ मैटर ऑफ ईयर्स. सो और ये जो पॉडकास्ट है, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन दैट, बिकॉज यहाँ पे अब आप मेंटोर्स को ही ला रहे हैं who have years of experience in failing, learning, evolving,
और उनकी सालों की एक्सपीरियंस हम आधे एक घंटे में पूरा जज्ब कर लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जज्ब करें. और इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर मी, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर दिस कम्युनिटी. जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहने वाला है. अमेजिंग. सो दोस्तों, आज का एपिसोड तो अब अपने एंड पे पहुंच रहा है और एंड पे हम कोशिश करेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर करने की हमारे को होस्ट मोहित के साथ आज और आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे और गेस्ट के साथ. सो सबसे पहला सवाल, मोहित, आर यू रेडी फॉर इट? I'll try to be ready. सो बिकॉज इट्स रिलेटेड टू विजडम एंड पर्सनल ग्रोथ, मेरे सवाल उसी के रिगार्डिंग होंगे. व्हाट इज द वन हैबिट यू बिलीव हैज द बिगेस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर पर्सनल लाइफ? Perseverance. Wow, this is beautiful. Okay, if you could give your younger self one piece of advice about personal life and growth, that 20-year-old Muheet who set on to start Kashmir Box, what would that advice be? Life is a way of figuring itself out. It's okay. Beautiful. And the third question, share a book or resource that has significantly improved your mindset and your personal growth journey. I'll share two. These are Okay. both documentaries. Uh-huh. One is a trip to infinity, Uh-huh. and the second is Our Universe. Both are available on Netflix. Beautiful. Thank you so much, Mohit, for sharing that. My pleasure. So, how do you navigate setbacks and maintain motivation during challenging times? Every day you get up, you tell yourself in the mirror that it's just another day. You keep on doing what you're doing, irrespective of what outcome is going to come. So there's no other way to do it. That's beautiful, There's no Mohit. other way. I wish think the there rapid was. fire is getting all the wisdom out of you in a big way. There's no other way, to be honest. So, Yeah. so the fifth one. Okay. Can you describe one specific moment or event that triggered a significant breakthrough in your life? Me becoming a father. Wow. I want you to explain on it a little. Uh, so it's been a year that, Alhamdulillah, I've been a father now. MashaAllah. And there's one thing that you realize when you become a father, Uh-huh. which is that you're not strong anymore. Whoa. And it's that instant, the moment you get to have that Wow. first look, it changes your universe entirely. You're in a completely parallel universe till Yeah. then, but the moment you get to see your child's face, alhamdulillah for it, you realize that the universe has changed. Yes. And the Muheet that was Uh-huh. cannot be the Muheet that is going to be in True. the future. So That's beautiful, Mohit. Thank you so much for these amazing answers. my pleasure. So, with this, ladies and gentlemen, we are bringing today's episode to a close. I hope you got some value out of it. I'm really excited to see a lot of these amazing guests, and they're going to share their amazing journeys with us. Are you excited too? Let me know in the comment sections. And Mohit, you have any parting words? No, I think it was a fantastic conversation. Thank you, Farhat, for being a part of it and agreeing to co-host the show with us. I think you have perfectly summed it up. The only thing I would like to add from my side is that whoever is listening to us, please understand that we are all on the same page. We all have the same stories. We all have the same journeys. So it's not just us trying to share information with you. Please feel free to comment, give us your suggestions. We would love to hear from you. What is it that you would want out of this podcast? Because I think community together is what will make this podcast a success. So we look forward to your feedback on this. Thank you. Bye bye. Khuda Hafiz.